The person I'm going to introduce is not a new personality to us. I had met him around 10 to 12 years back, and he had visited our school and conducted a seminar on the memory retention, how you got to few techniques teaching the students how you can retain your memory, how you can retain certain things by some objects or some numbers, or I still remember. And we had one student's mother who was associated with them in their group, Miss Komal, right? And if you all remember Miss Komal, the only thing which attracted about her was the long hair. She had a real long plait. So this is how I remember her. Anyway, we welcome the team members of India Book of Records, who is planning to create a record on the World Health Day, that is on 7th of April, with the project End of Illness. Today they are going to launch this project from our school. So we wish you good luck. May the DAV Lady Luck brings a lot of luck to you. So today they are going to launch this project from our school. So I welcome our special guest, Dr. Biswaroop Roy Chowdhury, founder and CEO, India Book of Records, and Mr. Manmohan, head operation. I will give a brief introduction of him. Dr. Biswaroop Roy Chowdhury, he is the only person to hold both mind and body in Guinness World Records. Specialization in China study, Cornell University, USA. Certificate in raw nutrition, Mint Culinary School, Vietnam. Author of 25 books on mind and body. And biography included in 2013 edition of Who is Who in the World. Inventor of mnemonic pen. So I give a very warm welcome to Dr. Biswaroop Roy. I would request you to start your session, sir. Thank you very much. Good morning, friends. Honorable Vice Principal Madam and my dear friends. So, thanks for this comfortable introduction. जब मैं आपके स्कूल में एंटर कर रहा था, I was really confident क्योंकि मेरा काम ही है बोलना सबसे आसान काम होता है, सुनना सबसे मुश्किल। लेकिन जैसे मैं आपके स्कूल में एंटर किया, मैंने देखा कि आपके स्कूल के बच्चों में कि मेरा तो ड्रेस वो स्कूल यूनिफॉर्म बन गया, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया। And then I entered, चलो कोई बात नहीं, I entered here, I was just setting the laptop, और डॉक्टर वीना उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब आ गए? मैंने कहा नहीं, कहा वो तो ठीक है लेकिन डॉक्टर साहब आ गए, तो आप समझ सकते हैं मेरी हार्ट बीट और बढ़ गई। बट फाइनली वाइस प्रिंसिपल मैडम ने कंफर्टेबल किया, थैंक्स फॉर दैट। एंड it is in medical term it is called white coat syndrome. What is white coat syndrome? The moment you enter the clinic, the moment you see a doctor, आपका हार्ट बीट थोड़ा बढ़ जाता है। जितना रेस्पेक्टेबल डॉक्टर होगा, जितना ज़्यादा उसकी फीस होगी, उतनी हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाएगी। And in 70% of the cases it happens, right, according to Harvard University's medical report. And that means at that time the blood pressure is the blood pressure which is being taken is not your real blood pressure. It is for the moment, उस वक्त के लिए. But अब डॉक्टर जब आपको प्रेस्क्रिप्शन देंगे, जो ब्लड प्रेशर उन्होंने मेजर किया, that on the basis of that he will give. This means the medicine of high BP, any of you, if you are taking that, is not your medicine, is not the right dose for you. It is because of that white coat syndrome, right? So white coat syndrome wala, and this is in 70% of cases. This means in 70% of the patient, the
medicine is not the real, it is the imaginary one. Right? So that means that BP cannot be measured in the clinic. If it is measured in the clinic, it will be a false high BP. Now try to go back to your past, about 10 years, 15 years, 20 years back. 20 साल पहले याद कीजिए, when you were in school, when I was in school, हार्डली हमने कभी सुना होगा हाई बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल हमारे पेरेंट्स में, हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कहीं भी, नेबर्स में। आज की तारीख में याद कीजिए ऐसा कोई भी परिवार जहाँ पे हाई बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल ना हो। राइट, देयर इज रेयरली अ केस। अब तो इसको दवाई मानते भी नहीं, इसको बीमारी मानते भी नहीं, इसको तो एक नॉर्मल रूटीन मानते हैं, जैसे पानी पीते हैं, जस्ट लाइक दैट। राइट, व्हेयरएज इट वाज नॉट एग्जिस्टेंट अबाउट से 15 इयर्स बैक। राइट, आज से 20 साल पहले इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, हर 500 में से एक बच्चा ऑटिज्म एंड डिस्लेक्सिया, एडीडी, एडीएचडी सिंड्रोम से ग्रस्त था, अबाउट 20 इयर्स बैक। आज की तारीख में 1 in 20। एंड यू आर द टेस्टिमोनी, आपके तो स्कूल, आप तो इन्वॉल्व है बच्चों के साथ, आपसे ज्यादा कौन जानते हैं इस बात को। अब सवाल यह है कि इस 20 साल में ऐसा क्या हो गया कि बच्चे इतने बीमार पड़ गए, इतने ज्यादा भयंकर रूप से बीमार पड़ गए। राइट, और ऑटिज्म की बात छोड़ें, डिस्लेक्सिया की बात छोड़ें, अगर हम नॉर्मल भी देखें, इफ आई थिंक ऑफ माय क्लिनिक, राइट, आज से कुछ साल पहले तक तो ऐसा था कि डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ये बड़े लोगों की बीमारी है, 40 प्लस की बीमारी है। लेकिन आज क्लास 5 के बच्चे, क्लास 3 के बच्चे, क्लास 2 के बच्चे, राइट, डायबिटीज है उनको, कोलेस्ट्रॉल है उनको, हाई, सारा कुछ है। राइट, तो यू कैनॉट डिस्टिंग्विश कि एज के साथ हमारा बीमारी से कोई कनेक्शन है, यू कैनॉट कोरिलेट दैट, इसका कोई कोरिलेशन आपको नहीं मिलने वाला। Whereas today there are, आज की तारीख में, while we are discussing, we are talking about preparing ourselves to prepare for World Health Day celebration. आज की तारीख में right now there are at least 8 civilizations where people they are able to celebrate 100 years of their life. Right? They live healthy, they die healthy. ये वो जगह है जहाँ पे लोग बीमार नहीं पड़ते, ये वो जगह है जहाँ पे बीमारी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, बीमार लोग नहीं रहते। वहाँ जाके बोलेंगे डायबिटीज, तो इट विल बी एलियन टू देम, ये डायबिटीज क्या होता है, एंड लिटरल सेंस में। राइट, आई कैन टेल यू बिकॉज आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस, ऑन दीज पीपल, एंड वन ऑफ देम बुद्धिस्ट मॉन्क। राइट, यहाँ 2.5 साल आई वाज विद देम टू डू अ रिसर्च कि ऐसा क्या वो करते हैं कि बीमारी नहीं पड़ते, दे आर नेवर इल। राइट, उनको अगर बीमार पड़ना पड़े तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट, डेलिबरेटली दे वांट टू बी सिक, इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर देम। राइट, सो and that is something amazing, right? Even tomorrow also I'm going for the next trip of Vietnam, and we are taking 25 people from India to Vietnam, ताकि वो वहाँ जाके देखें कि वो क्या है, ऐसा they can have a first hand experience. Maybe next time we'll have the next visit, साल में 2 बार होता है, so some of you can accompany me, right? वो सारा वियतनाम गवर्नमेंट ही कर रही है for them, going and staying, all that thing, right? So अगर हम बोलें कि बीमार नहीं पड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, तो हमें लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल सा है। राइट, बट ऐसे जगह हैं दुनिया में। राइट, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो बीमारी से मरता है। इंसान को 16,000 ऐसी बीमारी होती है जो बाकी एनिमल को होती नहीं है। क्या आपने कभी सुना बिल्ली हार्ट अटैक से मर गई? ये बड़ा फनी सा लग रहा है, लेकिन शर्मा जी हार्ट अटैक चल बसे, ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। राइट, हमें ये लगता है कि अगर इंसान को मरना तो है ही, इमॉर्टल तो कोई हो नहीं सकता, तो मरना तो कोई कारण तो चाहिए, तो इंसान बीमार पड़ता है, मरता है, ये तो बहुत ही एक नेचुरल सा प्रोसेस है। Whereas it is not natural. God has not made us to be sick and then dead. आप में से किसी के घर में अगर पेट हो तो उनको पता है कि जो पेट है, डॉग है, कैट है, वो बीमार पड़ के तड़प के, सड़ के, गल के, हॉस्पिटल में एडमिट होके, ऐसा नहीं, एक one fine day they are gone. And that is what the nature is. Right? That is what happened here. Right? About 2.5 years back, when I was in a trip to Vietnam, I got an opportunity to meet the lady with the world's oldest lady. Right? उनकी उम्र आप गेस कर पाएंगे? 119 साल. Right? And वो फंक्शन में she was present जैसे बाकी लोग. Right? She gave me a portrait made by her. Right? खुद से बना हुआ portrait दिया. और with the stamp of Vietnam government that is saying that it is the oldest living lady of the world. She is no more now. So सवाल दिमाग में मेरे आया कि इनकी उम्र 119 साल और ये अभी भी she is able to do all those things जो आप और हम कर सकते हैं, right? Even participating in any function or even
एंजॉइंग कि ये क्या हो रहा है सारा कुछ, वो सारा उनके सेंसेस उतने ही काम करते हैं जितने हमारे आपके काम करते हैं. So one question which came to me, what is so special about her which made her live till this long? एक सिंपल सा जवाब आता है कि जीन्स. चलो भाई अब तो बच गए, इनके जीन्स ही अच्छे हैं, हम क्या करें, वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं. But then I realized when I went more close to their family and her life, कि उनके परिवार में और भी कोई ऐसा जो कि 80, 90, 100 साल क्रॉस किया हो बिना बीमार पड़े, ऐसा और कोई मिला नहीं. तो इजीली आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई उनकी 119 साल का जो टू लिव टिल 119 years, it was not the genes. Had it been the genes, 2-4 लोग और भी तो उसके आसपास पहुंचते. This means there must be something else. कुछ ना कुछ और होगा इसका. वो जो कुछ ना कुछ और है, that is very interesting, and that is something which I am going to share with you, which you can share to your child, your students, your children, right, your family, your neighbors, right. वो इतना सिंपल है कि आप अमेज हो जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा. मुझे विश्वास नहीं हुआ, so I decided that I will be there for quite a long time to understand that, right. So I put those things on me, right. So on those kind of lifestyle, right. So in last 40 years of my life, today I am the healthiest of last 40 years, right. मेरी जिंदगी का आज मैं जितना healthy हूँ उतना कभी नहीं महसूस किया मैंने. So I thought it's so amazing, right. When I was 4 years of age, I was diagnosed with a hole in my heart, right. ASD उसको कहते हैं medical language में, right. उसकी एक सर्जरी होती है बड़ी, it is called open heart surgery. बड़ा ही खतरनाक होता है, मतलब उसमें सक्सेस चांसेस 50-50 होता है. आपके स्कूल में हो सकता है कोई एक बच्चा हो हार्ट में होल का, फिर डॉक्टर एक स्पेशल उसमें रिपोर्ट बना के देता है कि जब भी इसके स्कूल में एडमिशन कराओ, प्रिंसिपल को ये दिखा देना, वो समझ जाएगी एंड शी विल बी एंश्योरिंग कि क्लास में टीचर्स एक स्पेशल केयर करें, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना करने दे इस तरह से. सो माय स्कूलिंग एंड कॉलेज वाज लाइक दिस, वेरी पैसिव. बट देन व्हेन आई लर्न these skills, Vietnamese and all that, right, I applied on myself, I could heal myself, and then I made a world record, that is 198 push-ups. You understand push-ups? In 1 minute. That is my Guinness World Record, one of the world records. So एक सवाल दिमाग में आता है, had I known this when I was a kid, जब मैं क्लास 2 में था, तब अगर किसी स्कूल के टीचर ने मुझे बता दिया होता, राइट, किसी सिलेबस में लिखा होता, तो तब से ही तो मेरी लाइफ वैसी होती जैसे होनी चाहिए, जैसे किसी भी आम बच्चे की होती है. सो द बेस्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड, पता नहीं क्यों वो अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने तो क्या किसी की भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, किसी सिविलाइजेशन में है तो वो जनरेशन चला रहा है, दैट इज इट. बट वो जर्नल्स में तो चले गए हैं, राइट, जो रिसर्च करते हैं जर्नल में डालते हैं, बट जर्नल से मेन मीडिया में, मास मीडिया में या मेन एजुकेशन सेक्टर में अभी भी नहीं आया है. So it is very easy for us to believe that okay, we are sick, तो बीमार तो रहते हैं लोग, इसमें कौन सी बड़ी बात है. बट ये बड़ी बात है, बीमार जानवर नहीं रहता. अब देखिए कितने ठंड होती है, कितनी गर्मी होती है, कोई भी एनिमल, राइट, ऐसे बीमार नहीं पड़ता, वो तो बाहर ही रहता है, राइट, हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रहता. व्हाई वी आर सिक, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट हाफ एन आवर, and that is what I expect on World Health Day, that is on 7th April. You are going to distribute the same knowledge to your respective classes, right. For that I'll give you some material and then, right, जो आपको उस दिन help करेगा उस material से देख के बच्चों को बताने के लिए. So that is the intention. And on 7th April in the evening again we'll collect, and Dr. Kiran Bedi will be the chief guest in MCF auditorium, and your school will be honored for participating in this. So इसमें शुरू करते हैं. छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ. If I ask you, एक इमेजिनरी सिचुएशन लीजिए, आपका कोई दोस्त आता है, वो बोलता है कि भाई डॉक्टर ने बोला आई एम डायबिटिक, आई शुड नॉट टेक शुगर इन टी. Now he is asking for suggestion, just tell me what should I put instead of sugar so that at least I can enjoy the tea. What comes in your mind? आपके दिमाग में क्या बात आती है? शुगर फ्री. अब जरा सोच के बताइए, ये क्वेश्चन मैं जब भी पूछता हूँ, इवन छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं तो उनके दिमाग में भी ये आंसर आता है, शुगर फ्री. नाउ जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, गो बैक टू पास्ट मेमोरी, आस्क योरसेल्फ कि ये शुगर फ्री का नॉलेज कहाँ से मिला. किसी डॉक्टर ने बोला, किसी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है. बहुत ध्यान सोचेंगे तो याद आएगा बिपाशा बासु, मेरी सेहत का राज है, मेरी फिगर का राज है शुगर फ्री. नाउ जस्ट टेल मी, क्या आपको वाकई में लगता है बिपाशा बासु का फिगर का जो राज है वो शुगर फ्री है? इंटरनली यू नो कि ये तो भाई ऐसे ही बकवास है, तो किसी काम का तो नहीं है, यू नो. बट द रियलिटी इज दैट इफ
some friend of yours happen to come to you asking for a suggestion, तब भी आप शुगर भी बोलेंगे, although you know कि वो it may not, it doesn't work, she is not a doctor, right? So, but even then we do it. That is a very interesting science, and I want that you should share this science with your children. Whatever we do, why we do. NASA scientists, they wanted to know कि कोई भी काम कोई भी इंसान क्यों करता है, पता ये गलत है फिर भी करेंगे, राइट? अगर आप सोचते हैं जो हमारे लिए अच्छा हम करते हैं, जो खराब है वो नहीं करते, ऐसा है नहीं, राइट? नॉर्मल रूटीन, इट इज नॉट लाइक दैट. फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि योगा करना अच्छा होता है, जॉगिंग करना अच्छा होता है, वी हार्डली डू इट. हमें पता है तले हुए खाना अच्छा नहीं होता, वी स्टिल टेक इट. गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, वी स्टिल इन्वॉल्व इन इट. तो कोई भी चीज अच्छा है तो हम करेंगे, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है. तो कनेक्शन क्या है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. नासा साइंटिस्ट, दे डिड अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट फॉर दैट. व्हाट दे डिड, दे कलेक्टेड सम एस्ट्रोनॉट्स और उनको कॉन्वेक्स लेंस ग्लासेस, आई एम आल्सो हैविंग वन, आई विल शो यू. कॉन्वेक्स लेंस ग्लासेस पहना दी जिससे दुनिया उल्टी दिखाई देने लगती है. दिस टीचर मस्ट बी नोइंग. उस ग्लासेस से पैर ऊपर सिर नीचे, लाइक ऐसा दिखेगा. नाउ इमेजिन कि अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस ग्लासेस पहना दिया जाए, देन व्हाट वुड बी योर वर्ल्ड लाइक, राइट? कुछ देर में उनको उल्टी आने लगी, उनका डाइजेशन पुअर हो गया और उनका जो सेंस ऑफ बैलेंस खत्म हो गया, उनको नींद आना बंद हो गया, कई सारे सिम्टम आ गए. इवन देन दे कैरीड ऑन विद दैट. 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार वो ऐसा था लॉकेबल, वो खोल नहीं सकता. नहाना है तो चश्मा पहन के नहाना है, सोना है तो चश्मा पहन के सोना है. करते 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 10 दिन 15 दिन 20 दिन, 21वें दिन एक एस्ट्रोनॉट ने रिपोर्ट किया कि चश्मे के साथ ही मुझे सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है. नाउ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज एज नॉर्मल एज इट वाज प्रीवियसली. एंड 21वें दिन से लेके 30th डे तक ऑल द एस्ट्रोनॉट रिपोर्टेड कि चश्मे के साथ हमें सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है. नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द स्पेक्टिकल्स, राइट? तो साइंटिस्ट ने सोचा चलो चश्मा निकाल दिया जाए. जब चश्मा निकाला उन लोगों के विदाउट द ग्लासेस, उनको दुनिया उल्टी दिखाई देने लगी. Again, it took about the same time to flip it back to the normal. अब एस्ट्रोनॉट ने साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने 2 ग्रुप बना दिया अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स से, नए एस्ट्रोनॉट्स थे, और दोनों ग्रुप को चश्मा पहना दिया 15-15. और एक ग्रुप को क्या किया, 15 दिन बाद 16 दिन